So dear students, कल जो हम पढ़ रहे थे, we started female reproductive system. तो मैंने कहा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मैंने कल बताया था आपको. ना फर्स्ट जो उसमें है दैट इज ओवरी. पेयर ऑफ ओवरी जो है वो प्रेजेंट होती है. उसके बाद जो दूसरा होता है दैट इज a pair of fallopian tubes. A pair of fallopian tubes. तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज यूट्रस, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज द वोम्ब ऑफ द मदर. ओके, उसके बाद होता है यूट्रस के बाद मैंने बताया था कि जो टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक पे सर्वेक्स अलग दिया है, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ सर्वेक्स. ओके, उसके बाद वेजाइना, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिस या जिसको वुल्वा भी कहते हैं. ओके, और उसके बाद ब्रेस्ट्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रादर व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सबसे पहला जो ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे आज दैट इज दिस ओवरीज. सो आप लिखो पेयर ऑफ ओवरीज. फर्स्ट जो है दैट इज ओवरी. Ovary. Okay. Now, when we see this ovary, beta, this ovary, सबसे पहला जो point लिखोगे आप, this ovary is located in the lower abdomen. ठीक? It is located in the lower abdomen. Each ovary is almond shaped. जो almond होता है, okay? तो ओवरी और आलमंड की शेप एक जैसी होती है. सो ईच ओवरी इज आलमंड शेप्ड. अबाउट इसका जो साइज है ओवरी का, इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एवरेज अगर हम लेंगे तो 3 सेंटीमीटर ओवरी की जो लेंथ होती है. सो इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, 2 centimeter wide, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick, and 1 centimeter thick. Okay, so each ovary is almond shaped. It is 2 to 4 centimeter long, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick. Okay, मैंने जो डायमेंशंस बताई, these dimensions are according to your textbook. रेफरेंस पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है. तो इसके बाद ये हमने बताया इसकी शेप कैसी होती है, इसका साइज क्या होता है. तो बेटा जो ओवरीज हैं, these ovaries जो मैंने बताया, they are present in the lower abdomen and they are held in their position. जो ओवरीज होती है वो अपनी पोजीशन पे हेल्ड होती है with the help of 3 structures. They are held in their position with the help of the peritoneal coverings. Okay, तो वो आप peritoneal coverings याद रखोगे. Okay, the ovaries are held there, yeah, they are held to the broad ligament of uterus, broad ligament of uterus. यानी ये जो मैंने बताया broad ligament, this is broad ligament of uterus. ये uterus का होता है. These ovaries are held to this broad ligament of the uterus. यानी जो ovaries होती है वो इस uterus के broad ligament से attached होती है with the help of a double fold of, mesovaria. Okay, यानी इस यूट्रस में एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, और उस ब्रॉड लिगामेंट को ये ओवरीज हेल्ड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर जिसको मैंने कहा मेसोवेरिया. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकंड पॉइंट जो इसमें आप याद रखोगे, द ओवरीज आर आल्सो अटैच्ड, या दे आर आल्सो अटैच्ड टू द यूट्रस, डायरेक्टली टू द यूट्रस. दे आर आल्सो अटैच्ड टू द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट, This is number second point जो आप याद रखोगे. These ovaries are also attached to the lateral pelvic wall.
यानी जो लेटरल pelvic wall होते हैं, okay, these ovaries are also attached to the lateral pelvic wall with the help of suspensory ligament. With the help of suspensory ligament. So you will remember this point कि जो ovaries है वो अपनी position पे कैसे held होती है. They are held there. They are held to the broad ligament of uterus with the help of mesomeria. They are attached to the uterus with the help of ovarian ligament, and they are attached to the lateral pelvic wall with the help of the suspensory ligament. And these structures, these peritoneal structures, they help these ligaments, they help the ovary to held in its position. Okay. Now, when we see further the structure, जो ओवरी का मेन स्ट्रक्चर है, तो इसके बाद लिखोगे आप द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो नाउ सी बेटा, व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, लाइक टेस्टिस, हमने बताया था टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं दिस, अगर आपको याद होगा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे उनमें प्रेजेंट था जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू जो बनाता था किसको, स्पर्म्स को. ऐसे ही जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखते हैं या टीएस ऑफ ओवरी देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी देखते हैं, तो बेटा ये जो ओवरी होती है, ईच ओवरी इज लाइनेड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो मैंने यहाँ पे बनाया है. सो ईच ओवरी इज लाइनेड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज द, जिसको कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, which is called a germinal epithelium, or you can also call it as the germ layer. Okay, so each ovary is covered by a layer of epithelial tissue which is called as the germinal epithelium. Okay, or it's also called as the germ layer. It's also called as the germ layer. Okay, outside the germ layer, when we see outside this germ layer, outside this germ layer, okay, peritoneal coverings are present. So outside this germ layer, peritoneal covering is also present. Okay, जैसे हमने टेस्टिस में भी देखा था, उसमें भी peritoneal coverings है, तो इसमें भी peritoneal coverings होती है. अच्छा, when we see inside the germinal epithelium, there is a diffused structure. ये diffused structure होता है, ये जिस तरह टेस्टिस में वेल डेवलप्ड होता है, उस तरह ओवरीज में इतना डेवलप्ड नहीं होता है, और इसी को कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज द ट्यूनिका अल्ब्यूगाइनिया. दिस कॉल्ड एज द ट्यूनिका अल्ब्यूगाइनिया. दैट डिफ्यूज्ड, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, दैट डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ tunica albuginia is also present. Now, further, when we see the internal structure of ovary, internally, you will write down that the ovaries are solid structures. Internally, ये solid structures होते हैं, and they are filled with the connective tissue. Internally, जो ovaries होते हैं, they are filled with the connective tissue, and that connective tissue, जो ovaries में fill होता है, that's called as the stroma. इसको कहते हैं, you will write down, it is called as the stroma, S-T-R-O-M-A. Okay, so it's called as the stroma. Further, when we see this stroma is divided into two parts. इस stroma को जो germinal epithelium के अंदर होता है, it is divided into two parts. इसका जो outer part होता है, ये वाला, this outer part, it is called as ovarian cortex. Outermost layer जो इसका होता है, it is called as the ovarian cortex. और जो inner वाला इसका portion होता है, ये वाला portion, it is called as ovarian medulla. It is called as the ovarian medulla. Okay, quickly मैं revise करता हूँ. I told you कि जो ovaries होती है, उन ovaries को बाहर से covering होती है. That covering is called as the germinal epithelium, or that's called as the germ layer. Okay. Inner to the germ layer के अंदर एक diffuse
दिस ट्यूनिका अल्ब्यूगिनिया प्रेजेंट होता है, ओके। और when we see inside the germinal epithelium there is present connective tissue and that's called as the stroma, जिसको हम stroma कहते हैं, ओके। अब ये जो स्ट्रोमा होता है ovaries का, the stroma is divided into two parts. Its outermost part that's called as the cortex and the inner part and that's called as the medulla, or we can say it ovarian cortex and ovarian medulla, okay. Now further when we see in this ovarian medulla, so you have to remember it, in this ovarian medulla a large number of follicles are present which are in different stages of development. So you write down that in this medulla a large number of follicles, ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, these are follicles, okay. These follicles are also called as the Graafian follicles. A large number of follicles or a large number of Graafian follicles, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है जिसने इनको नाम और जिसने इनको डिस्कवर किया था उसका नाम था ग्राफ, तो that's why they are called as the Graafian follicles. So in the medulla a large number of Graafian follicles are present which are in the different stages of development. ये जो different stage of development term मैंने बताई, ये मैं आगे आपको समझा दूंगा, okay. So this is the structure of this ovary, okay, which I will explain to you in a while ago, okay. Now further when we see बेटा, जब हम देखते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, असल में हमें इंटरनली यही डिस्कस करना है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं। सो उसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और मैंने ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों बनाए। नाउ सी बेटा, सबसे पहला जो पॉइंट आप याद रखोगे ओवरीज में, वो ये कि जो ओवरीज होती है, ओवरीज में जो एग्स प्रेजेंट होते हैं, कि जो ओवरीज में एग्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी एग्स प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। जब एक गर्ल चाइल्ड जन्म देती है, ओके, तो उसके ओवरीज में एग्स उस टाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो एग्स होते हैं वो इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं और वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, वो अभी पूरे डेवलप्ड नहीं हुए होते, ओके। तो जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद वो जो उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, तो वो ग्राफियन फॉलिकल्स आहिस्ता आहिस्ता फिर मैच्योर हो जाते हैं, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि एक ग्राफियन फॉलिकल या एक एग कैसे बनता है इन द ओवरी ऑफ ए फीमेल, ओके। नाउ सी बेटा, व्हेन वी सी दिस जर्मिनल एपिथेलियम, मैंने कहा था आपको कि जर्मिनल एपिथेलियम को हम जर्म लेयर इसलिए कहते हैं या जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं दे आर इन स्टेट ऑफ डिवीजन, वो डिवाइड होती है और उनसे स्पर्म्स बनते हैं या उनसे एग्स बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। नाउ सी, अब ये जो जर्म लेयर है ओवरीज का, ओके, तो ये जो जर्म सेल्स होती है बिफोर बर्थ ये जो जर्म सेल्स होते हैं, these germ cells undergo mitotic divisions. इनमें माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, तो जब इनमें इस जर्म लेयर की सेल्स में माइटोटिक डिविजन होती है, ओके, तो वहां हमने कहा था इन केस ऑफ टेस्टिस हमने बताया था कि वहां पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द जर्म सेल्स। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं oogenesis, and oogenesis means the process of formation of the egg. तो ये जो जर्म सेल है, असल में जो एग होता है वो इन्हीं जर्म सेल से बनता है। अब कैसे बनता है थोड़ा बहुत मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं सो दैट आपको ये स्ट्रक्चर जो ओवरी है वो पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ सी बेटा, अब ये जो जर्म लेयर है बिफोर बर्थ में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जब एक फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, उसके ओवरीज में ऑलरेडी जो एग्स होते हैं इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये जो जर्म सेल्स होते हैं दे अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स। ये जर्म सेल्स माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो आपको पता है कि जब एक सेल डिवाइड होते हैं दैट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ द सेल्स, ओके। एक सेल डिवाइड होंगे वो 2 बनाएंगे, 2 डिवाइड होंगे वो 4 बनाएंगे,
और यहाँ पे ये जो जर्म सेल है ये डिवाइड हुई है और इसने ये बहुत सारे सेल्स बनाए हैं। ओके, तो इन सेल्स को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एग ट्यूब, दैट्स कॉल्ड एज द, मैं ऊपर लिखता हूं, दैट्स कॉल्ड एज द एग ट्यूब, एग ट्यूब ऑफ, एग ट्यूब ऑफ फ्लूजन, इसको कहते हैं egg tube of fusion. So here the germ cells undergo mitotic divisions and they form a number of cells, okay, and that group of cells is called as, इसको हम कहते हैं egg tube of fusion. Okay, यही egg tube बाद में क्या हो जाता है, ये egg tube यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, it forms the, इसको हम कहते हैं, ये हम आगे डिटेल पढ़ेंगे in menstrual cycle, it forms the egg nest. तो इसके बाद यही एग ट्यूब ऑफ फ्लूजर जो है, या एग ट्यूब आप सिंपली याद रखो, इट फॉर्म्स द एग नेस्ट। अब इस एग नेस्ट में बहुत सारी सेल्स हैं जिनमें कैपेसिटी है कि वो एक एग बनाए, इसलिए इसको कहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द एग नेस्ट। ओके, लेकिन ये एग नेस्ट आगे जाके यहां जो मैंने दिखाया है, ठीक, दिस एग नेस्ट फॉर्म्स द, दैट्स कॉल्ड एज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, that's called as the primary follicle. So they form the primary follicle. अब ये बात आपको समझनी है, सीना। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, यहां पे मैंने जो बीच में बनाया है, दिस इज द फ्यूचर एग या फ्यूचर ओवम। ये फ्यूचर एग है या फ्यूचर ओवम है जो असल में एग बनाएगा। अब इसके सराउंडिंग में जो सेल्स थी, इसके सराउंडिंग में जो सेल्स थी, these cells will not form the egg, वो अब egg को नहीं बनाएंगे, बल्कि they will help this developing egg, ये जो egg अब डेवलप हो रहा है ये उसी को मदद करेंगे। That's why इन cells को हम कहते हैं, हम they are not now called as the follicular cells, इनको कहते हैं follicular cells। तो egg nest में क्या होता है, egg nest जब बनता है, egg nest में फिर सभी cells egg नहीं बनाती, बल्कि एग नेस्ट की सिर्फ एक सेल जो है वो फ्यूचर ओवम बनाती है, और जो बाकी सेल्स होते हैं दे गेट सराउंड, दे सराउंड दिस फ्यूचर ओवम और दे सराउंड दिस फ्यूचर एग। ओके, तो उन सेल्स को कहते हैं फॉलिकल सेल्स। ओके, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम, नाउ इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल। सो प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल सिंपली मींस a follicle which contains the future ovum and is surrounded by a layer of this follicular cells. Okay, now when this primary follicle grows further, it forms this one, and this is called as the secondary follicle. Okay, so this is called as the secondary follicle. This is called as the secondary follicle. Okay, so it forms the secondary follicle. It further grows. Okay, finally what happens at the time of puberty? Puberty मैंने कल बताया आपको, puberty is the age at which the reproductive organs become functional. जब reproductive organs functional बनते हैं, so that's called as the puberty. Now see, when this secondary follicle then grows into this, जिसको हम कहते हैं mature Graafian follicle. Now it's called as the mature Graafian follicle. I will write down here, mature Graafian follicle. But here you have to remember one thing, that is this follicle only matures after puberty. Before puberty, no Graafian follicle will mature. Okay, so it forms mature Graafian follicle. Okay, now when it forms a mature Graafian follicle, so you will remember here one thing, that at the time of puberty, जब puberty आ जाती है females में, they begin to release the egg from the ovary. And you will remember that the release of egg from the ovary is called as the ovulation. उस process को कहते हैं ovulation. Ovulation means release of egg from the ovary, and a female releases egg from the ovary soon after puberty, rather soon at the time of puberty. Okay, now see, this mature Graafian follicle at the time of puberty, now it bursts.
it bursts and it releases it bursts. I will show you. Sorry. Yes, it bursts and it releases the egg. It bursts and it releases the egg. Okay. So when it releases the egg, this process is called as the ovulation. इस process को कहते हैं ovulation. Now, beta, when ovulation occurs, when a mature Graafian follicle, releases the egg from the ovary by the process of the ovulation, a part of this Graafian follicle, rather the major part of the Graafian follicle का जो major part होता है, that remains within the ovary. Only the egg is released along with a few follicular cells. Most of the mature Graafian follicle remains within the ovary. And this part of the mature Graafian follicle, which remains within the ovary, that gets transformed into another structure. And that structure is called as the corpus luteum. So that structure is called as the corpus luteum. Now see, this corpus luteum acts as an endocrine gland. Which I will explain you ahead. And this corpus luteum then degenerates. It also degenerates. Okay, I will tell you further how it degenerates. This corpus luteum also degenerates, and the degenerating corpus luteum is called as corpus albicans. That's why I have shown these structures in this manner. I will explain you. I will repeat it. I told you, मैंने बताया आपको कि each ovary जो है, that is lined by a layer of cells which is called as the germinal epithelium or germ cells. Okay, now this germinal epithelial cells undergo mitotic divisions. They undergo mitotic divisions first and form a layer of cells, which is called as the egg tube, or this is simply called as the egg tube of Flügger. Okay, now this egg tube of Flügger then changes into this structure which is called as the egg nest. Okay, now this egg nest changes into the primary follicle. As I told you, in the primary follicle, only one cell develops as the future ovum. The rest of the cells are called as the follicular cells, and these follicular cells help us the developing ovum, okay, in its process of development. Okay, now this primary follicle then changes into the secondary follicle as it grows, and this secondary follicle changes into the mature Graafian follicle. Okay, now the mature Graafian follicle is only formed at the time of the puberty. Okay, now at the time of puberty, this mature Graafian follicle from the ovary, and the release of egg from the ovary, by the mature Graafian follicle, that process is called as the ovulation. Okay, now after the process of ovulation, the major part of this mature Graafian follicle remains within the ovary, and that is called as the major part of the mature Graafian follicle which remains within the ovary, that transforms into corpus luteum. And corpus luteum is an endocrine gland, which I will explain you ahead. This corpus luteum then also degenerates, and the degenerating corpus luteum is called as the corpus albicans. Okay, now you will here remember that the ovary, whether it is left ovary or it is right ovary, each ovary
is filled with thousands of these grafting follicles in various stages of development. Each ovary is filled with thousands of these grafting follicles in various stages of development. Means some grafting follicles may be in form of primary follicles, some may be in secondary follicles. And each month after puberty, each month only one grafting follicle matures. Puberty के बाद हर महीने एक grafting follicle mature होता है, and that releases the egg from the ovary. Okay, so this is the structure of the ovary. Okay, किसी को कोई confusion है इसमें? Is there any sort of confusion? No, sir. No, sir. Okay. I will because disconnect class आप फिर join हो जाओगे, तो कि जब भी join this immediately.